Hey, good evening, everyone, and welcome to this evening session. We meet every week and we present some really interesting, concepts and ideas every week. We have heard from our team of Jiyyo, from Siddharth, a few months ago, but this time he comes with a much larger team, and there are real patients, real doctors, people on the ground and how we use technology uh, and how he's bringing things to the last mile in terms of healthcare. We will be hearing from Siddharth. So over to you, Siddharth and Steen. Awesome. Thanks, Dr. Jadeep. Good evening, everyone. Very happy to be able to talk about our work and stories from the last mile healthcare, where Jiyyo has been working for past 5 years. We have a pretty decent uh, and deep presence in last mile, which by last mile we mean villages, small towns, and corners of cities. And based on the number of installations, number of franchises we have sold in last 5 years, we believe we are world's largest chain of AI-enabled last mile healthcare distribution centers. So in this session, I'll first quickly introduce Jiyyo for 5-6 minutes, and then we'll go on to hear experience and stories from various stakeholders on Jiyyo's platform, like consulting doctors who provide consultations on Jiyyo's platform, health partners who seek consultations for some of their patients, and some patients themselves who got significant benefit of treatment through Jiyyo's platform. So I'll just quickly introduce Jiyyo. So we are a 5-year-old company based in Chandigarh. Our flagship product is Jiyyo Mitra eClinic. We are a team size of 32 right now, full-time plus part-time people. We are majorly focused on last mile healthcare. And we visualize our work to be a confluence of these four fields: healthcare, social science, computer science, and data science. So all these four fields play different roles in what we have developed and where we are taking it going forward, and always open to suggestions from experts in the field. So what we do. So Jiyyo injects good quality healthcare in rural and semi-urban regions. So that's kind of our one-liner on of what we do. How we do this? We do this by connecting the last mile medical shops with qualified doctors via Jiyyo's video-based telemedicine platform. And I'll qualify like what do we mean by medical shop? It's a short for a larger category of healthcare premises operating in the villages, small towns, and even cities. And the basis for Jiyyo's work is telemedicine practice guidelines, which were published by Government of India in March 2020. So those are the legal blessings of the whole framework we work under. So now some more details, right? So rural healthcare has very sparse presence of qualified doctors. Rural healthcare itself is composed of thousands, hundreds of thousands of small fragmented villages of 2,000 population here, 8,000 there, 12,000 there. And these areas, they have more than 15 lakh moderately qualified private care providers operating in those areas, like pharmacists, Ayush practitioners, GNMs, like lab technicians, first aid clinics. And these private care providers are willing to adopt an asset-light e-clinic model to increase the handling of patients, they come across, right? And of course, improve their own practice as well and business prospects.
So when we say they are willing to adopt this model, we say this on the basis of selling more than 22,000 such franchises in the last 5 years across 200 districts of India. Right? And every month we add around 15 to 20 new centers. These are all paid by rural practitioners, these franchises. And average LTV, lifetime value for such clinics, sorry, average life of these clinics so far has been around 2 years on an average, with oldest operating e-clinic is 4.3 years old, right? So we visualize this average life to also increase with time because overall, we are a 5-year-old company with bulk of e-clinics coming up in last 2.5 years. These e-clinics, they produce satisfactory patient outcomes and also important medical data. We have seen more than 400,000 patient visits so far, with 40% patient repeat rates on a daily basis. By this repeat rate, we mean our definition of this is that if we see 100 patients today, at least 40 of them have visited the same center any day before today. And we also have 5% patients with more than 1 year of follow-up period with us. So long-term treatment, we see examples of those as well in these asset-light small centers. We also have 150 plus qualified on-platform doctors with an average tenure of 20 plus months. And they have all kinds of degrees, qualifications with them, and from MBBS to MD, MCH, all these things. And after I'm done, like a couple of our doctors would also speak about their, you'll be able to hear them speak as well. Now, next, these e-clinics, they are futuristic in terms of they can help drive AI adoption in healthcare as well. We have seen this firsthand on the traction of various AI features which we introduced last year, like face scan, eye scan, some symptom checker as well. So there has been enthusiasm in trying out new technologies. So such e-clinics, they also can serve as a vehicle to disseminate new kind of technologies in far-flung areas in a very cost-effective manner. Also, these clinics are economically viable, right? They're self-sustaining. They do not need unbalanced, one-sided or donation-based system to or grants for them to run. Patients pay for their own treatment. And now our average MRR is around 6,000 rupees with self-sustaining margins. Now, there are several challenges in this category as well. This is a highly uncharted territory, right? The combination of rural healthcare plus technology and plus paid healthcare is unprecedented. So we are kind of exploring and devising solutions as we go by, and this is very interesting, very exciting for us as well. This is kind of just applied research in a way, right? Another challenge we come across is that in such areas, the thought process is relatively more conservative. Okay, sometimes there is suspicion of new initiatives. There are lots of on-ground frauds, small frauds here and there. So that makes people more skeptical of newer initiatives, especially which involve some payment to be made, right? Then there is some unwillingness to pay premium to get quality. There's also some laid-back attitude regarding healthcare. We frequently discuss internally that for a patient, either it is a primary healthcare problem or emergency, right? There are rarely in between thing unless surgery is prescribed by some consulting doctor, which is a separate case. And solution in this domain have to be low cost and highly scalable. Right? They have to be super highly scalable. They cannot be cost intensive. And this whole industry, we believe, or we have seen evidence for this, that they are low margin, high volume themed systems. So that's the thought process. 600,000 plus villages present an enormous
opportunity from multiple perspectives, from impact, healthcare impact, from data generation and subsequent utilization for betterment of the patients, and economics as well. So I'll stop sharing my screen and would like to invite Dr. Pradeep, who has been on Jiyyo's platform for last 3 years and has seen more than 30,000 patients, right, on Jiyyo's platform. He's one of the most popular doctor on Jiyyo's platform. And hello, Dr. Pradeep. हाँ जी सर, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में सर, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जियो पर, किस टाइप के पेशेंट्स देखे आपने, कैसा इम्पैक्ट रिस्पांस? हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर प्रदीप शर्मा, ए मेंबर ऑफ जियो टीम। जियो प्लेटफॉर्म से मैं लास्ट 3 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने लगभग 35,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जिसमें नॉर्मल सीजनल डिसीज के साथ साथ क्रॉनिक डिसीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड के पेशेंट को भी ट्रीट किया है। इसके साथ साथ स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसी मतलब गंभीर बीमारियों को टाइमली क्लिनिकली डायग्नोस कर प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर हायर सेंटर रेफर किया, जिससे काफी लोगों की जान बचाई जा सकी। यह सब कुछ जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है, जिसके थ्रू हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर सके जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, और कई बार प्रॉपर डायग्नोसिस ना होने की वजह से भी छोटी छोटी बीमारियां बड़ा रूप ले लेती हैं। तो यह सब कुछ जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू ही संभव हो पाया है। जियो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने एक शहर में बैठकर पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट्स के छोटे से गांव के पेशेंट्स को देख सकता हूँ, उसके साथ उसकी बीमारियों को देख सकता हूँ, उसको ट्रीट कर सकता हूँ। तो ये जियो के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है, जहां हम अपने घर पे बैठ के किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से, किसी भी बड़े शहर के डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं यही चाहता हूँ कि जो हेल्थ पार्टनर्स हैं, मैंने भी उनसे कई बार यही कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पेशेंट्स को जियो के थ्रू दिखाएं और आप बेहतर लाभ लें। जियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर के साथ साथ स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, हर तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो इसके लिए मैं जियो टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली थैंकफुल टू सीईओ सिद्धार्थ अंग्रेज सर, मेघना मैम एंड होल टीम, जो इतना अच्छा बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म लेके आए और हम सब इससे जुड़े हुए हैं। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस टीम का पार्ट हूँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप सर। आप थोड़ा उस पर बताना चाहेंगे कुछ कि पेशेंट फॉलोअप कैसा रहता है एक बार दिखाने के बाद, और दूसरा जब वीडियो पे पेशेंट दिखाते हैं तो उनको कितना ट्रस्ट इसमें और कितना उनको एंगेजमेंट फील होती है, विश्वास होता है कि जैसे डेली में जैसे 30 to 40 पेशेंट्स ऑन एन एवरेज देखता हूँ, तो उसमें मतलब 15 to 20 पेशेंट्स फॉलोअप वाले ही रहते हैं। मतलब जो मैं 10 डेज, 7 डेज, कुछ 15 डेज के अंदर रिपीट होते हैं पेशेंट। और पेशेंट का ट्रस्ट है, क्योंकि पेशेंट मतलब पहले, सबसे पहले हेल्थ पार्टनर्स हमसे बात करते हैं, पेशेंट्स की जो वाइटल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है उसको ब्रीफ करते हैं, उसके बाद वो पेशेंट से बात कराते हैं। तो पेशेंट्स को ट्रीट है, जब पेशेंट को ट्रस्ट है, जब वो लौट के आ रहा है, मतलब 10 दिन में, 5 दिन में। कई पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो जिनका फॉलोअप पिछले 1 साल 2 साल से चल रहा है, 2021 2022 से पेशेंट लगातार आ रहा है। तो पेशेंट का ट्रस्ट है। Thank you, Dr. Pradeep. So, after everyone has spoken from our side, we will open this platform for question answer thing as well. Right? Thank you, Dr. Pradeep. Would like to invite Dr. Meghna Sharma. She is a MD pediatrician doctor, again on Jio's platform for several years, has seen, I think, more than 10,000 patients. Dr. Meghna, if you'd like to share your experience and thoughts. Thanks, Siddharth, and good evening, everyone. So I am, Siddharth has already introduced. I'm Dr. Meghna Sharma. I'm basically a pediatrician
And after doing my MBBS, MD, and SRship from Medical College, Chandigarh, then I worked in different government and private platforms before coming to Jiyyo. I'm one of the oldest doctor. So when we began, multiple patients from all walks of life, all senior citizens, everyone. So pretty experienced in seeing GP patients also along with pediatrics. So as with time we have added more and more doctors. Dr. Pradeep Sharma has uh, is more popular and more in geriatric and all general patients. So I'm now focusing more on pediatric patients. So Jiyyo as such has given me a lot of exposure. So now, and also, as we used to learn during our times, like you have to make a diagnosis basis on the history before, putting a stethoscope to a patient or touching the patient. So, and I think all those words came true, and slowly with the, with proper history, with talking to the patient, different exposures. So we have learned a lot on how we can make a diagnosis based upon history and observation of the patient. So seeing patients across all profile, sometimes, so many chronic patients. I have 5-6 necrotic syndrome patients who are undergoing treatment for past 5-6 years. So recently came across myoclonic epilepsy patient in Jharkhand. So we got a MRI of that patient, got a EEG also. We started him on steroids followed by on valprine, and we followed up with that patient. He is showing 75% of improvement. So all this, all these treatment and all these patient follow up has given a boost. Yes, we can treat, significant illnesses also through telemedicine. It's just not a simple platform where just doctor-patient consultation. So a lot more can be done. So recently came across from Rajasthan, came across a patient, a 4-year-old girl who suddenly gained 20 kgs. She was 10 kgs in when she was 1.5 years, and now she is 34 kgs. And they were getting treatment from the AIIMS Jodhpur also, so it's still under diagnosis. So then we discussed it with our neurologist and pediatric neurologist also, and we found that that child is having a Rohat syndrome. It is a rare type of autoimmune encephalitis, and which if treated timely can be beneficial in some cases. Some cases it can be fatal also. So we discussed with parents, explained them. They were also educated. So they tried searching what is Rohat syndrome. So found, yes, we were able to make a right diagnosis for that patient. And this is for 3-4 days back. So Jiyyo, so many patients, so many, we have so much profile of patients. So I can tell, like in June, we are having so many thrombocytopenia patients. Now we have diarrhea patients, hepatitis patients. So we have a whole profile of patients. So which can be utilized for a disease-specific intervention, for knowing the incidence or prevalence of different diseases, for even rare diseases. So many doctors in our in all specialties, GP and super specialties, they've seen so many rare patients also. This is just not only normal day-to-day illnesses. We do see, around 10 to 15% of the patients who have so many different ailments, chronic ailments. So recently, we 11-year-old girl with vitiligo, then autoimmune thyroiditis. Now she is having, she's ANA positive. So our rheumatologist treated her. Earlier, they consulted me also. So this gives a lot of satisfaction to patient who is sitting in a rural area, and follow up in a local medical college may not be very easy for them. So such patients getting benefited and treatment from their nearest geometry clinic is really, encourages us that such centers should be in more and more areas in India. So that's all I can tell about Jiyyo. So Dr. Meghna, sometimes it is thought these days that ever since COVID pandemic, has subsided or has gone away, probably telemedicine does not hold that much
importance. So, and what are your thoughts on that? Yeah, the same thing I was trying to tell. See, this one patient from Nupur Bedi, it is in Himachal in a remote area. She is getting treated for nephrotic syndrome. So every 3 months she gets a relapse, she gets treated, she is fine, and she doesn't have to go to a local tertiary center. Sometimes, so we have doctors from all profiles, and was just a part. COVID just encouraged us. Yes, this can be a solution for one of the health problems, but after COVID, we realized that many diseases can be followed, or in fact, patients across all illnesses can get consultation through telemedicine and through this center, and then we can decide upon whether these patient needs a referral or they needs a follow up. And even after they get a surgery, they can consult via this method, and so many patients are doing so. So we have a surgery patient who got his surgery done. Now he's under follow-up of Dr. Parvesh Sharia, and similar in orthopedics. So he's under follow-up. Yes, I have improved. Now this is the situation. So the follow-up of chronic ailments and significant ailments is another very useful, advantage of this telemedicine. So it is just should not be a simple video consultation. It is a chronic follow-up which is needed for patients who live beyond cities. So Thanks, Dr. Meghna. I'm not supposed to live, but yes, this is that patient which I so I don't want to show the identity. So I hope the girl survives and I have done the right thing. No, certainly, like great stories. And we come across such stories on an almost daily basis. Like, so one feeling which we have kind of developed over time is that patients who do not get great treatment locally or wherever they can travel to, they end up getting great treatment at Jiyyo centers. Because we have a collection of kind of highly qualified doctors, right, who have kind of stood the test of time, right? And they come from different places, not kind of one specific area. So kind of a better filtering, better collection of doctors. So and I've heard so many things from Mr. C.L. Pandya also. Pandya sir told me like how a patient with severe psychosis benefited from a treatment of from one of our psychiatrists, and how they were thankful. So earlier they were tying that patient and going to fields for work. So that is a great improvement. Yeah. Awesome, Dr. Meghna. Dr. Kirti, would like to invite Dr. Kirti. He's an MD psychiatrist on Jiyyo's platform for past couple of years, has treated several psychiatry ailment-related patients to their great satisfaction. So Dr. Kirti, please share your views. Good evening, everyone, and thanking everyone for giving me this opportunity to express how things have worked with Jiyyo. So I have been working with Jiyyo for more than 3 years, and my name is Dr. Kirti. I am MD DNB Psychiatry. So first of all, I would like to say that our branch itself is a big challenge to work in Jiyyo, because first of all, they work at last mile, and nobody in last mile understands or thinks that it is a psychiatric illness. Everybody thinks it's black magic, it's God given, and they should be not a part and parcel of the society. Or most of the time, they are left alone in temples or on roads. Nobody caters to any kind of psychosis or depression or anxiety in any way. And second thing is that not only the doctor plays a role in Jiyyo, but the most important part is the health partner or the HP, because we provide medications, we understand their history and go through that, but still, until and unless the HP makes them believe that this thing is treatable and this is apart something different than black magic, those people won't accept medications. That is the biggest problem for us in psychiatry. So nearly around 1,000 cases I have seen, and that too is a big number for me
as per the case ratios, not that cases are not there in India, but cases don't come to us because most of the time they are taken care of by faith healers. So first of all, I would like to thank all the dedicated health partners and the doctors, those who refer out and detect psychiatric cases to us. And I would like to express my thanks and understandability that not only psychosis cases have come, but anxiety cases have come up. Along with that, chronic schizophrenic cases have come up, and drug de-addiction, like CL Pandya sir is there. He gives in a lot of drug de-addiction cases. They have also come up. So we get varied amount of cases in our lifetime with Jiyyo. So it's good to understand at the last mile, people are not only getting awareness about psychiatric illness, but they are also getting awareness about a lot of other things. Second thing is that how is the follow-up and how is the treatment profile? First of all is that we don't get very detailed history in Jiyyo platform to take because the time constraint is there. People are very busy and we don't get detailed history evaluations, but still the health partners take in a lot of pain to understand the history, take 20-30 minutes of time, then they jot it down, then summarize the case to us. Basing that, we do our diagnosis, and it has worked. First of all, when I came in, telemedicine was not that famous. So I joined something around in 2021. So just around that COVID time, and psychiatry and telemedicine in India was just coming up. So that is a huge thing that health partners have been trained very well by Geomitra people so that they have brought this up. And not only this, I will tell you from distant rural places, especially from Jharkhand and Pandya sir, all these places, we get a lot of cases. And they refer us not only in the morning times, but in the odd hours also, even at night, 9 p.m., 10 p.m. I have found out clients, those who have come to us and have been treated. And the major part of action is that our medications take time to work. It doesn't happen over time like with other subjects. They see magic in 2 days, 3 days. But in our subject, it takes 7 to 10 days. And to keep the faith alive among people that these medications will not hurt you and will work, that has been the greatest challenge in telemedicine. And apart from that, once people are treated, they stop medications because most of the time, like medicine, pediatrics, gynec, everywhere, they have limited amount of days where they give medications. Not all medications are for chronic, but most of psychiatric illnesses are chronic illnesses. So our major hurdles which have been crossed by Jiyyo Innovations is training the health partners, counseling of patients by health partners, and appropriately detecting psychiatric cases and getting them to us. That has been a huge, great achievement by them. And I hope that this will work out even better and things and detection of mental illness in the last mile will increase. Awesome. Thanks, Dr. Kirti. Dr. Kirti, can you share a little bit about that specific patient case? If I remember correctly, there's one from Kangra who had visited around 40 times in last 2.5 years, the local Geomitra clinic to avail consultation from you, right? Kind of a great example of long-term chronic ailment treatment. So first of all, the parents of a daughter had come to that clinic, and the daughter was most of the time sitting aloof, not talking to anyone, and everyone was thinking that Mata aa gayi hai, God has come into her, and they were like, first of all, praying to God and praying her. But slowly and slowly, the HP there detected it and showed it to us. Like, sir, what is this? We don't know, something abnormal is happening. So we detected it as a case of schizophrenia, childhood onset, and we started treatment. And slowly, first they started consulting every 7 days because they didn't find any results. But after repeatedly consulting 3 times, they started seeing results. The HP was very cooperative in making them understand that it will work, it will work. And finally, after 1 month, when they got back their child, the child recovered from their psychotic phase. Things changed a lot. And till now, also in between, they come in. The child is completely performing well. Academically, he is also good. He's interacting with his brothers and sisters and is not even having any more psychological deficits. Also, her cognitive abilities have improved. So this shows that with just simple interventions, we can change a person's life, because if that person wouldn't have been detected,
they would have clearly ended up in chronic schizophrenia state, and treating them ahead would be very difficult. And as Meghna madam always pointed out, chronic cases need follow-up, and follow-up is not possible for those kinds of people always, and it is very hectic and financially very troublesome. So that has been minimalized by Jiyyo Innovations, and they have found out ways how to intervene at the farthest place where doctor for consultations are very difficult to find, and apart from that, specialist consultations are even rarest of the things to find there. So that has been a real tough scenario which has been changed by them. Hopefully it will keep improving. Sorry. So unable to and- hear you, sir. What are your thoughts on adherence rate to the prescribed treatment, right? Do patients typically follow what has been prescribed to them? Yeah. So one thing is that adherence rates are mostly dependent on the HPs, because the way they guide the client, they work out. Because most of the time, even after getting magical results, people always come back and say, what to do next? Should I show again or should I continue this? So most of the time, if HPs are educated and understand and have experience in dealing with psychiatric patients, then adherence is very good. That's very nice. But if it is an inexperienced HP newcomer who has just established his clinic, he treats them just like a medicine patient. So they take medicine 2 to 3 weeks, then it's done. Then for 6 months, they are wandering away somewhere. And again, when the problem increases, then they come back to us. But with time, those people learn. If 6 months to 7 months of dealing with psychiatric cases, even 1 or 2 cases, then their experience increases, because mental illness is not only found in high social economic status, but is there in low socio-economic status also very much. And it is very high rates of negligence and high rates of myths and disbeliefs are there in the society. So breaking them down and getting those things to be detected is a big challenge. So hopefully if the HPs start giving at least 1 case each in every month, then also things will change a lot. That's what my detection rate is. Every HP, if they give 1 case of psychiatry, they will absolutely find it in any kind of medicine, gynec, whatever case you choose, somewhere down the lane, some mental illness is always connected. Got it. Certainly, Dr. Kirti, great suggestions. So it's kind of a continuous process to keep training, retraining, right, with new methodologies and new subject content as well. So thanks, Dr. Kirti, sharing your thoughts. Now we'll move on to the next chapter of this kind of discussion / experience sharing session. I'll move on to Hindi now, right? We'll talk to some of our health partners, right? और अभी एक हमारे साथ हैं मृत्युंजय जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जो जियो ई क्लिनिक चला रहे हैं एक साल से ऊपर मेरे ख्याल से। मृत्युंजय जी, आप बताएं अपना एक्सपीरियंस, अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, आप कहाँ से हैं, कैसे चला रहे हैं? Good evening, everybody. I am Mrityunjay Mukherjee. Actually, I am a BSc and Doctors of Natural Medicine, also in past MBA, and I have 2 decades of experience in pharmaceutical management and also the hospital management. तो जब हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में थे, उसी टाइम हम देख रहे थे जो इंटीरियर रिमोट एरिया का पेशेंट का क्या स्थिति है। तो उसी टाइम हम सोच लिया था ऐसा कुछ करे जिसमें मिल जाए रिमोट एरिया का पेशेंट का सुविधा। तो मिल गया है हमारा सिद्धार्थ जी का कृपा से जियो मित्र ई क्लिनिक। और जियो मित्र ई क्लिनिक बोलने से पहले हम थोड़ा यूएसपी थोड़ा बोलेंगे। एक्चुअली क्या है, इससे पहले हम और भी 3-4 जो टेलीमेडिसिन का कंपनी है हम देख चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इतना अच्छा लगा जियो मित्रो लेने के बाद, काफी हम सेटिस्फाइड है। इसी वजह से जो इधर
एक चीज जो है दूसरे में क्या प्रॉब्लम होता है, जो डॉक्टर मांगते हैं, जो नीड है डॉक्टर का, अगर किसी का जरूरत है एक एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट का, अगर अगर वही उसी जगह में हम पेशेंट बोल रहे हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और मिलता है एमडी मेडिसिन, और पेशेंट को उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। हाँ, जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट बोला है, कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी क्या है, इनको भेज दिया गया है। तो ये सब जो जियो में नहीं होता है। जियो में सबसे बड़ा चीज जो है, हम जो डॉक्टर को चाहेंगे, पेशेंट जो डॉक्टर को चाहेंगे, वो डॉक्टर तुरंत मिलता है। सबसे बड़ा बात है, तुरंत मिल जाता है। अगर देर भी होता है थोड़ा सा, तो वो भी कम्युनिकेट हो जाता है इतना जल्दी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पेशेंट बोलते हैं कितना बजे डॉक्टर साहब को मिलेंगे, तो हम लोगों को यही मिल जाता है। जो टाइम भी एक जो स्पैन है, वो भी कितना बजे होगा वो भी मिल जाता है। और जियो का और एक चीज अच्छा लगता है, जियो में टोटल जो चिंता है वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें फार्मास्यूटिकल डिवीजन भी जुड़े हुए हैं, वो भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और पेशेंट, मेरा इधर का जो पेशेंट है, ये लोग जियो से जो पेशेंट को दिखाया है, वो तो खुद बहुत खुश है। और सर जो बोल रहे थे, रेफरल जो सिस्टम जो है, जो फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए, हमारा तो इधर देख रहे हैं, हमारा 60% पेशेंट आ जाता है। खासतौर से हम यही बोलेंगे, प्रदीप सर को तो हम बहुत थैंक्स देंगे, क्योंकि प्रदीप सर का जितना पेशेंट है, उसमें 60 to 65 तो आ ही जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मृत्युंजय जी। बहुत बढ़िया लगा आपके पॉइंट सुनकर। मैं इनवाइट करता हूँ पांड्या जी को, जो बीकानेर से हैं, जो जियो क्लिनिक को शायद 4 या 3.5 साल से चला रहे हैं। पांड्या जी। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्कार पांड्या जी। बताएं सर अपना एक्सपीरियंस, सर, अनुभव। मेरा नाम सीएल पांड्या, और मैं करीबन 3-3.5 साल से सर जियो क्लिनिक अपने मेडिकल फार्मेसी में चला रहा हूँ सर। बेसिकली मैंने सर बीएससी की थी, उसके बाद मैंने फार्मेसी कर ली, और यहाँ पे भी बीकानेर के पास बड़ा कस्बा है सर, महाजन, जो एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज के नाम से मशहूर है सर। आप गूगल पे सर्च करो तो इंडिया की, एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है सर। तो यहाँ पे रूरल एरिया है सर, डॉक्टरों की सुविधा थोड़ी कम है। डॉक्टर जो बड़े हैं वो करीबन 150 किलोमीटर दूर बीकानेर है सर, वहाँ है। तो इसकी फ्रेंचाइजी लेने के बाद में सर मैंने करीबन 3,500-4,000 मरीजों को यहाँ दिखाया है। तो सारे मरीजों का सर बहुत ही बढ़िया इलाज हुआ है यहाँ पर। कम समय लगता है, कम पैसा लगता है, और सारी फैकल्टी के डॉक्टर सर एक ही जगह मिल जाते हैं। दिन में मैंने 2-3 पेशेंटों को सर अपने यहाँ पे बुलाया। रात को सर 1 बजे एक पेशेंट के एमआई हो गया सर। तो रात को 1 बजे सर कोई मेडिसिन का डॉक्टर कहाँ मिलेगा सर। तो उनका मेरे पास कॉल आया, तो मैंने कहा आप तुरंत आइए, मैं जियो क्लिनिक से कंफर्म करता हूँ कि डॉक्टर है या नहीं। तो डॉक्टरों को मैंने कॉल किया, तो डॉक्टर ने कहा भी ठीक है, इमरजेंसी हम देखेंगे अभी। उसका ईसीजी वगैरह सर हमने रात को 1 बजे किया, और 1 बजे सर उनको एमआई डिटेक्ट हुआ। उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट बढ़िया डॉक्टरों ने करके यहाँ और हायर सेंटर पे रेफर किया सर। रात को 3 बजे वो बड़े सेंटर पे पहुंचे, उन्होंने कहा भी आपको बहुत अच्छी टाइम से आपकी बीमारी का डायग्नोज हो गया, और आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल गया। फिर उनके सर आगे इलाज हुआ, और इस कार्य की सराहना हुई सर हमारे उन डॉक्टरों के द्वारा जो बड़े सेंटर पे थे। तो उसी यूनिट की पेशेंट को भी मैंने बुलाया है सर। 1 मिनट आइए कन्हैया जी। ये पेशेंट है सर हमारे, जो आपको बताएंगे सर, 20 किलोमीटर दूर से मैंने बुलाया और आए हैं सर ये। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बताइए। जी सर। बताएं सर, कैसे आपकी क्या थी स्थिति, क्या सिचुएशन, कैसे इम्प्रूव हुई, क्या प्रॉब्लम थी? हाँ जी। प्रॉब्लम जो छाती में दर्द हुआ साहब। ये मारवाड़ी बोल रहे हैं सर, हिंदी बोल सकते हैं? हिंदी बहुत बोल मारवाड़ी बोल रहे हैं कि छाती में दर्द हुआ, मतलब उनके छाती में चेस्ट पेन हुआ सर। अच्छा जी। और रात को 1 बजे के करीब पेन हुआ, राइट? बहुत एडवाइस
2022 में सर बता रहे हैं 24 मार्च को 24 मार्च 2022 को डॉक्टर वीके असवाल ने रात को इनको देखा सर, और एमआई डिटेक्ट हो गया और प्राइमरी एड बहुत बढ़िया मिला। पेशेंट 15 मिनट में चेस्ट पेन से रिलीव हो गए और हायर सेंटर पहुंच गए सर आराम से। ग्रेट सर, ग्रेट स्टोरी, बहुत अच्छा लगा सर सुनकर कि देखिए ये चीज हुई है। ये रियल रियल लाइफ इम्पैक्ट है, राइट? और थ्रू अ वेरी लो कॉस्ट सोल्यूशन विच कैन बी डिप्लॉयड एवरीवेयर। तो यही चीजें देखिए पांड्या जी, जैसे ये मरीज ठीक हुए हैं, ठीक हुए हैं, ऐसे लाखों मरीज होंगे जो कभी भी कहीं दौरा पड़ गया, कोई स्ट्रोक पड़ गया, नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है, हाउ टू फाइंड, कैसे पता लगाएं, कहाँ लेके जाएं, सीरियस प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, राइट? कोई पास किस पे लेके जाए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उस टाइम उनका आंसर इजी नहीं होता है। और एक कॉस्ट इम्प्लीकेशन भी होती है कि ले तो जाएं एम्बुलेंस में, पर अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई तो खर्चा हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल सेंटर्स हैं ये बहुत ही कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं हर जगह, कि वहां पे यू कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ डॉक्टर। तो अगेन बहुत बढ़िया लगा पांडे जी ये वाला एग्जाम्पल सुन के। कोई और है पेशेंट जो सर अगर बहुत मजा, एक पेशेंट और है सर, एक लड़की के पापा आए हैं, इन्होंने बहुत इलाज कराया सर, अपने बच्ची का इलाज नहीं हुआ, वो कंपटीशन की तैयारी कर रही है और बीकानेर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उस बच्ची का इलाज नहीं हुआ, और यहाँ हमारे डॉक्टर संदीप गर्ग ने मात्र 1.5 महीने दवाई दे के उस बच्चे को ठीक कर दिया, और अब उसकी दवाई एकदम बंद है सर। क्योंकि लड़की के फादर है सर ओम जी, लड़की अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, वो पढ़ाई में बिजी है। बहुत बढ़िया सर, बताएं सर अपनी थोड़ी स्टोरी, कैसा तो रहा? बताए सर, हाँ जी, हाँ। मैंने तो बीकानेर ले गए थे और बच्चे को बीकानेर लेके गए तो इसके ये पागल तरह हो गई, ये माइंड है ना इसका खराब हो गया। मैंने सोचा इसका मानसिक की बीमारी है, वो ही नहीं थी, इसकी जांच करवाई, इसमें कुछ नहीं है। फिर मैं वो लास्ट स्टेज पे हो गई कि भाई बचेगी नहीं ये लड़की, तो ये पागल हो गई, कुछ खाती नहीं। फिर मैं, वो हमारे पास एक पांड्या जी डॉक्टर है, पुराना इसके पिताजी है, इसको पास लेके चले। फिर छगन जी बोले कि हम ऑनलाइन अभी चेक करवाते हैं। तो इस दवाई से बहुत फायदा है हमारे, और अब बच्ची दवाई बंद है, अब वो पढ़ाई करने लग गई, आरएस की तैयारी कर रही है सर। वो सर आरएस आईपीएस की तैयारी कर रही है, और बच्ची को सर बीकानेर में डॉक्टरों ने कहा पढ़ाई बंद करा दो, हमारे डॉक्टर ने कहा नहीं पढ़ाई चालू रखेंगे, और बच्ची सर एकदम ठीक है। एकदम ठीक है सर। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया जी। ये देखिए ये सब सुन के और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आता है कि यार ऐसे और हजारों पेशेंट्स होंगे, लाखों होंगे इस टाइप के पेशेंट जिनको और टाइमली। सर तो मेरे 3 पेशेंट ऐसे हैं जो यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर हैं सर, उनकी चमड़ी की 44 साल पुरानी और एक मरीज की 36 साल पुरानी बीमारी सही हुई सर, वो मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, नहीं तो सर मैं उनको भी जरूर बुलाता नजदीक होते तो। ग्रेट सर, ग्रेट पांड्या जी, बहुत बढ़िया सर आपने स्टोरी शेयर करी और बड़ा अच्छा लगा सुन के। आई होप कि देखिए हमारा ये जो इस मीटिंग का एक गोल ये भी है कि इन स्टोरीज को हम आपस में डिस्कस करें और थोड़ा सोशल मीडिया पर भी इनको रखें कि रियल कैसे इम्पैक्ट आ रहा है इन लो कॉस्ट सॉल्यूशंस का। ये कोई ऐसा नहीं है कि निश एरिया है कि कुछ ही लोगों को समझ में आता है या कुछ शहरों में ही चलती है, नहीं। इसका सबसे ज्यादा डीप इम्पैक्ट तो जो हमारे दूर दराज के एरियाज है वहां पर है, और जो एविडेंट है यहाँ पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पांड्या जी। थैंक यू भाई साहब। तो देखिए डॉक्टर जयदीप, दीज आर द स्टोरीज एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच स्टोरीज पॉसिबल आउट देयर which can be kind of powerfully told and of course harnessed as well. So we are done from our Yes. participant side, right? सबसे पहले तो ये जो हमारा जो ये हेल्थ और टेक्नोलॉजी का जो समुदाय है उनकी तरफ से पांड्या जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो जो मरीज मतलब रात के 9:30 बजे 20 किलोमीटर दूर से हैं, उनके लिए तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू, तो थैंक यू। ये इन ये बात की हाँ, लगन है सर, लगन से आए हैं और अपनी गाड़ी किराए पे लेके आए हैं सर ये। सर ये इसके लिए तो बस क्या बोले अब। हम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मतलब इस सिस्टम पे आपका जो विश्वास है, हम लोग क्या है, हमारा जो समुदाय है, हम ऐसे टेक्नोलॉजियां बनाते हैं और इनके बारे में बात करते हैं, कुछ कुछ नए आविष्कार करते हैं, ये हमारा समुदाय है। लेकिन हमें तब तक पता नहीं चलता कि इसका उपयोग आप जैसे मरीजों के पास कैसे हो रहा है, जब तक हम ये बात नहीं करते हैं। और आप लोगों से बात करके
हमें तो बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिला है कि ये जो हम कर रहे हैं भाई सही कर रहे हैं, इसको और करना है, और जगह पे करना है, और बेहतर करना है। शायद पता नहीं इससे सस्ता हो सकता है कि नहीं, पर कम से कम बेहतर करना है, और ज्यादा से ज्यादा जितने, जैसे आपकी बेटी का जीवन बदला है, वैसे कितनी सारी बेटियां होंगी हमारे देश में जिनका जीवन बदल सकते हैं केवल टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये जो आपके सामने जो जो भी है डिवाइस है पांडे जी, ये मोबाइल फोन है ना आप जिससे कर रहे हैं? सर 5G का है, बढ़िया सर, इसमें क्लियरिटी बढ़िया बहुत है, बढ़िया। हाँ। तो ये मोबाइल फोन सिर्फ मतलब लोग ऐसे वैसे वीडियो देखने के लिए या कुछ फजूल के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर देखिए इससे हम जीवन बचा रहे हैं। और ये जो है काफी मतलब मैं ऑब्वियसली बिल्कुल जो है जियो और सिद्धार्थ और इन सब की तो मैं बहुत ही मतलब तारीफ करता हूँ। बट आपका धन्यवाद है कि आपने हमें आज हमारे साथ आके आपने हमें ये प्रोत्साहन दिया कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी और दादा, मृत्युंजय दादा, थैंक यू सो मच। आप हैं ना अभी? सेवा के भाव से काम करते हैं सर, सेवा के थैंक यू आप सो मच। अपडेट आ रहे हैं। और मृत्युंजय दादा ने बोला कि कैसे वो मतलब उन्होंने ट्राई भी किया काफी सारे टेली हेल्थ टेली मेडिसिन के जो हैं प्लेटफॉर्म्स और ट्राई किए, और उसमें से जियो जैसे लगाया। तो एक एक जो है क्वेश्चन है आपके लिए कि ऐसा क्या मतलब कर सकते हैं कि और मतलब इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें क्या क्या और सुविधा बाकी जो है हमारे पास, जो आज हमारे कम्युनिटी की तरफ से जो लोग आए हैं। पहले सबसे पहले तो आई वांट टू वेलकम डॉक्टर हरित चतुर्वेदी, जो दिल्ली में कैंसर के बहुत ही सीनियर हमारे प्रैक्टिशनर हैं। और आई कैन सी मानसी, जो एक रीनल का वो करते हैं। प्रशांत इज देयर फ्रॉम मेडिटॉर्च, डॉक्टर श्रीधर इज देयर। सो वेलकम टू ऑल दी अदर मेंबर्स। ऑफ कोर्स हमारे लीडर हैं मिस्टर अतुल बत्रा हैं, भारत हैं। और हम लोग इन सारी बातों को हम लेते हैं और भी शेयर करेंगे। हमारा बहुत बड़ा कम्युनिटी है और इसमें हम बताएंगे। तो आप दादा बता सकते हैं कि हम इसको कैसे मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, या इसमें और टेक्निकल और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा बताएं। आप ही के लिए दादा, आप ही बोलिए। एक्चुअली जदीप सर, मेनली जो दो चीज हमको लगा इतना अच्छा होने के बाद भी, जैसे पेशेंट का सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कलर प्रिस्क्रिप्शन आता है ना, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में सब बोलता है ये जेरोक्स मिल गया कहाँ से है? और दूसरा बात है, एक्चुअली ये मेडिको लीगल में ही है, डॉक्टर का सिग्नेचर का जरूरत होता है। तो हाँ ये हाँ अगर हो जाए तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, ये सब तो आई थिंक सिद्धार्थ वी कैन टॉक अबाउट दिस। पर और कोई इसमें और कोई टेक्नोलॉजी की तरफ से या ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप जरूर जियो की टीम के साथ शेयर करिएगा। एंड नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू आस्क डॉक्टर मेघना, लाइक biggest question in telemedicine, especially pediatrics, is that I'm not touching the patient, right? And how do you? I know the answer because I am working with telemedicine. But please, if you can share, how do you reach a good diagnosis or a very much more accurate diagnosis just over a teleconsultation? Yeah, sir. Yes. So, sir, as I mentioned, history. So frequently, what I mentioned was some of the chronic illnesses, but the frequent patients are gastroenteritis or fever or endemic fever. So in most of these patients, after a detailed history, we just observe the patient for any tachypnea. Okay. I ask the important questions I ask is apart from the routine history, I ask whether the child is taking feed,
whether he's passing urine, whether he's like interacting with parents or not, and whether he's passing urine or whether he's breathing normally or not. Then we make an observation on the patient. Many times the patient is, if the baby is not crying, then it is very easy. Sometimes, yes, the baby is crying. So we sometimes have to make the baby feed. And at that time, we observe the respiratory rate of the baby. And then I observe the sensorium of the patient. Whether the child is interacting with the surroundings or interacting with the mother, how is behaving in the society, surroundings. That is one of the important reason, examination. Then another thing is most of our e-clinics have now a saturation and pulse oximeter and temperature. So the temperature, oxygenation, and pulse rate adds to the important vitals. So I can differentiate whether this is normal or not, or this child needs a referral or not. And since frequently we get gastroenteritis patients, now I see many health partners are already trained. So many times they themselves are able to identify, yes, this child is not well, he is sick, dehydrated, इसको रेफर कर दें या समटाइम्स कुछ ट्रीटमेंट करें या क्या करें. उनकी तरफ से भी गाइडेंस आता है काफी ज्यादा. एंड स्किन पिंच वगैरह जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का है वो इजीली देख लेते हैं. So dehydration, they can, I think 95% of them can make out whether it is some or severe dehydration. And the rest of these examination and these observations help me treat a patient. Excellent, excellent, Dr. Meghna. I must really congratulate you because I have taught in medical college for 20 years, and I say you have to touch the patient, otherwise you cannot see. Then after some time, I realized मैं क्या बोल रहा हूँ, because it doesn't always make sense. You can always ask somebody else to touch. So if your health practitioner is able to do the examination and relate, and if you trust them, I think the important word, one very important word is trust. जो हम लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं in this system, I think that is what makes it good. Thank you very much, Jiyyo team. I'd like to open anybody, Atul, Bharat, Dr. Harith. I know Dr. Harith has put up one, he has very powerful stories. Kudos to Jiyyo. Sir, would you like to ask? Yeah, Jaydeep, I would say compliment the team. Excellent, yeah. So we all are using virtual platforms quite extensively. This is very powerful. The reach is amazing. And I think, as you mentioned, that examination initially used to be a very important part of all evaluations, but gradually modern tools, I would say, in terms of imaging, other things, it has gone down significantly. Even those who are seeing physically or sitting across the table are not examining patients. That has become a bane of modern medicine, I would say. But in this situation, it's an advantage because here we are using that distance. We are able to overcome all those things by other methods. And the most important thing is not just for routine problems. They can identify major problems through early signals and help referrals to big and appropriate experts. And what I sense over the conversation that they've got all kinds of experts on the available, and therefore the knowledge exchange must be very rapid, very fast, and the education of your teams, health professionals and partners, all that is actually having a huge multiplier effect across. So I think it's a very, very amazing or very powerful outreach, and this should be focused also to combat or rather prevent major illnesses. Like we know a lot of things are lifestyle diseases and all that. If you use these platforms and use these health partners for that space as well, not just in solutions, in problems, but also in educating them on basic things and getting rid of tobacco, alcohol, all just the reach of preventive medicine can multiply so much. So I think amazing exchange and very powerful. Thank you. Thank you, Dr. Harith. And I know we have talked many non-technology things right now. There's a huge amount of technology which goes behind it, but
we are out of time, but we'll talk about technology at some other session, Siddharth, and would like to know the AI and the face recognition and the face diagnostic tools that you have. Please do showcase to us sometime. I'll just want to hear from Dr. Amarjeet as well. He's a senior person from Chandigarh. Siddharth. Yes. So Dr. Amarjeet is a retired professor from PGI Chandigarh, right? Has been a consistent advisor to us on several things. Has guided various parts of our journey so far. So Dr. Amarjeet, any तो thoughts? सबसे पहले सबको नमस्कार। और ये बता के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये, क्योंकि काफी गैप के बाद मुझे पता लगा कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो ये पांड्या जी, उन्होंने जो बताया कि किस तरह से पेशेंट की हेल्प की, प्रदीप शर्मा जी और मुखर्जी, उन्होंने बताया कि काफी सारे टेलीमेडिसिन के उन्होंने ऑप्शंस पहले यूज किए, फिर जियो को अच्छा माना। तो ये मतलब इट इज गोइंग, आई थिंक बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत यू आर डूइंग, आई थिंक ह्यूमन सर्विस टू द कम्युनिटी फॉर हेल्थ केयर। जो आई थिंक जो एक बड़ा हैकनीड सा टर्म आ गया, एआई एनेबल्ड। तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि वो फेस रिकॉग्निशन सब करे, तो थोड़ा सा हम इसको और वो कर सकते हैं कि एआई जो पेशेंट फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली, मतलब मैंने एक यूनिवर्सिटी में गया था अभी लास्ट वीक, तो मैंने लिखा एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी। अब वो ये कहीं नहीं लिख रहे कि स्टूडेंट फ्रेंडली एआई यूज, पेशेंट फ्रेंडली। और एक शाहरुख खान की बात करें तो मैं हूं ना वाली चीज हम इसमें ले आए। मतलब ऑलरेडी जियो ये कर रहा है। जैसे गोल्डन आवर की बात की ना, कि विद इन वो एमआई का या चेस्ट पेन का उन्होंने बड़ी जल्दी केयर प्रोवाइड कर दिया। सो दैट इज रियली ग्रेट। और इस तरह का एक फीलिंग आ जाए पेशेंट के मन में कि जियो तो है ना, मतलब ये कोई दिक्कत है तो एक कॉन्फिडेंस रिमोट एरिया में, जो पेरिफेरल एरिया में, ये आ जाए कि हमारे पास एक ऐसा एजेंसी है जियो, जिसके थ्रू हम हेल्थ प्रोवाइडर से कांटेक्ट करके हमें जो रिक्वायर्ड केयर है वो मिल जाएगी, चाहे एमआई वाली या चाहे स्ट्रोक वाली, जैसे सिद्धार्थ कह रहे थे, इस तरह का। और एक सिद्धार्थ ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि प्रीमियम लोग देना नहीं चाहते। तो अगर आप जैसे कई कंपनी से पहले बात भी कर रहे थे कि इंश्योरेंस वाला कंसेप्ट, जैसे अपोलो ने काफी सालों पहले किया था, कि ये गारंटी कि अगर हैं तो आपके पास एश्योर्ड है कि कुछ भी होगा तो हम हैं। और ऑफ कोर्स प्रैक्टिशनर के साथ वो वाला अप्रोच, मूवीज की बातें मैं करता हूँ कि हम साथ साथ हैं, तो साथ साथ ये चल रहे हैं। तो एक फेलो फीलिंग और ये गोल्डन आवर वाला कंसेप्ट, आई थिंक क्वाइट गुड। और वो जो अभी लास्ट में सर ने बोला कि ये बिना टच किए, जो डॉक्टर मेघना ने अच्छी तरह उसको बताया कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, तो वो कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं। और ये कंसेप्ट चेंज करने में आई थिंक जियो का एक इम्पोर्टेंट हाथ रहेगा। और आगे लोग इसको याद करेंगे कि जियो ने हमारा मेडिकल कॉलेज का पढ़ाई ही बदल दिया। वो कुव्वत हम जियो में ऑलरेडी आ चुकी है और आएगी। इट इज गोइंग टू चेंज द मेडिकल एजुकेशन, जैसा मेडिकल एजुकेशन का अभी बता रहे थे। Yes, yes, sir. Absolutely. आई थिंक आप बता रहे थे ना कि मेडिकल एजुकेशन में हम ये पढ़ाते थे टच के, ये तो ये सब बदलने वाला है। एंड आई एम ग्लैड दैट जियो इज द, हम कहते हैं अशर्ड इन द चेंज, चेंज लाने वाला एक प्लेटफॉर्म बन गया है। तो दैट इज क्वाइट गुड। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम एंड बेस्ट विशेस। Thanks. Thank you. Thanks, Thank you sir. very much. Thank you very much. We हम लोग 9:30 बजे बंद कर देते हैं। वैसे आज थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर भी अगर आप किसी को कुछ कहना है तो कहेंगे, एंड उसके बाद हम विल फॉर्मली क्लोज इट। अतुल। एक लास्ट चीज कहे बिना मैं रुक नहीं सकता, जो उनकी लाल कमीज लाल पर्दे से मुखर्जी सर की बहुत मैच कर रही थी, बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर जयदीप, मैं आज एक चीज सीखा हूँ कि जिसका कोई नहीं उसका जियो है। अरे क्या ये बात आज है। so I bow to all the doctors. Siddharth, most inspiring session today, one of the best I've seen in a very long time. Thank you, Ji. Thanks, Atul. Great. Thank you. Thank you. So, Bharat, should we close then?
I think we're a little above time. We can always Will- continue the conversation offline, but I can We stop the can stop the recording for recording. now. Yeah. So thank you very much, everyone, for joining.